श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा। तं त्वा भगः प्रविशानि स्वाहा समाभगः प्रविश स्वाहा। तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। यथा पप्रवतायन्ति यथा मासाहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। प्रतिवेशोऽसि प्रमापाहि प्रमापद्यस्व। यो यशो यशस्वी जने जनसमूहे सानि भवानी श्रेयान् प्रशस्तरो वस्यसो वसीयसः वसुतरात् वसुमत्तरात् वासनीयः वासनीति वासानीति इति अन्वयः वासानीति अन्वयः। किंच तम ब्रह्मणः कोशभूतं त्वां हे भगवन् पूजावान् प्रविशानि प्रविश्य च अनन्यस्त्वत् आत्मेव भवानीत्यर्थः। स त्वमपि मां भगवन् प्रविश आवयोः एकत्वमेवास्तु। तस्मिन् त्वयि सहस्रशाखे बहुशाखाभेदेः भगवन् निमृजे शोधयामि अहं पापकृत्याम्। वेरी ब्यूटिफुल। सो मेक मी यशस्वी popular among janasamuhe, among the public. Shreyan, that is, make me wealthier than the wealthiest. Second one. Shreyan vasya sosani swaha tam tva bhaga pravishani swaha. Beautiful. He Bhagavan Pujavan Pravishyacha Ananyastvat Atma eva Bhavani Ityartaha.
So you become Ananya, one with me. Moreover, Sa Tvamapi Mam Bhaga, He Bhagavan Pravisha. So let me become one with you, you enter into me, I enter into you. Avayoho ekattvame vastu tasmin tvayi sahasrashake bahushaka bhede he Bhagavan nimruje shodhayami aham papakrutyam. So let me enter into you, sahasrashake, of the one who is diversified forms, he Bhagavan, let me enter and cleanse myself in you. When I enter into you, आपके शुद्ध चैतन्य में गोता लगाने के बाद all my sins will be dispelled, destroyed. Papakrutyam, very beautiful. Now, afterwards, how examples are given? How all these things should happen? But another example, another things the prayer started. Yatha loke apaha pravanavata nimnavata deshena yanti gachanti. यथाचा मासा अहर्जरम संवत्सरो अहर्जरः अहोभिः परिवर्तमानो लोकान् जरयति इति अहानि वा अस्मिन् जीर्यन्ति अंतर्भवन्ति इति अहर्जरः तं च यथा मासा आयन्ति एवं मां ब्रह्मचारिणः हे धातः सर्वस्य विधातः मां आयान्तु अवगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वतः सर्वदिभ्यः. Beautiful. Mamayantu agachantu. Now, yatha, in this world, loke, in the world normally we see apaha means water. What does water do? Water always travel towards slope. Pravanavata nimnavata deshena yanti gachanti. So water is always flows towards down. Just as water flows towards downside. Then, yathacha masa aharjaram samvatsaro aharjaraha. Why samvatsara is called? Ahaha means day. Day, D-A-Y. Ahaha. Aha means day. Now, jaraha means, you know jarayati. Jara means old age, decay. Now, aharjara means what? Samvatsara. Meaning year. The year is called aharjaraha, samvatsaro aharjaraha. So year. So aharjaraha means, why samvatsara is called aharjaraha? Beautiful. Ahobihi. Aho means day, no? Why samvatsara is aharjaraha? Ahobihi parivartamano. No. In a year, all the days change from one day to other day. Days keep on changing. The changing days you find in a year. So thus parivartamano lokan jarayati iti ahani. That means lokan, here the words you can take or people you can take. They wear out, jarayati, wear out. Every day wears out in the year. So samvatsara you take a big circle or big something unto which every day comes and wears out. So every day is wearing out in the samvatsara year. So therefore, ahaha jaraha. Jara means decay. Ahaha means that in which every day changes and day by day the change takes place and it becomes jirnam bhavati. Jirnam means decays. That is the meaning. So every day the day comes and becomes, they change and they decay. Therefore, it is called as aharjaraha. Lokan jarayati iti ahani. So all the days, every day, diminishing, decaying. Therefore, aharjaraha. That is one meaning. Va, otherwise, asmin jiryanti, antarbhavanti iti aharjaraha. So one way is, the second meaning what I told you first, that is, one is lokan jarayati, the people wear out in time, in the year. Lokan, people, prajaha, they wear out every year. In the year by year, they wear out. So year consumes. Second one is days change and days become wear out. So either two meanings you take, aharjaraha, antarbhavanti iti aharjaraha. Now just as water flows towards slope, just as days keep changing, they decay and merge in the year, samvatsara consumes. Similarly, tancha yatha masayanti
See, yadaha masaha tam samvatsaram. That in that samvatsara, just as masa months also rolls and disappear, days disappear, months disappear. Months are consumed by time, and year consumes. So in the year, months are disappearing. Water flows towards slope. Months and all flows towards samvatsara and disappear unto samvatsara. Days continue, they decay and disappear into samvatsara. Similarly, yantu masa yanti evam, thus mam, towards me. Let brahmacharis, let students come. Brahmacharinaha, those who are seekers of truth, knowledge. He dhata, he sarvasya vidhata, mam ayantu. Beautiful. Agachantu. So let all the brahmacharis, let the students come unto me. Just as water flows towards downside, let brahmacharis flow towards me. Just as days merge in the year, let all the students come to me from wherever they are. Vimayantu brahmacharina swaha, from different locations. Let all the students, let all, everybody come. Brahmachari means youth. Engage only brahmachari ashrama, the vatus, the children and the youth. So let at that age of people, let all of them come to me. It's a prayer. So let brahmacharinaha, he dhata, he parameshwaraha, O sarvasya vidhata, you are the vidhata of the everything, total world, of all, one and all. You are the creator, you are the Ishvara. So I am praying to him. Hey Parameshwara, Mamayantu, let all of them come towards me, to me. Example is, just as water flows, let brahmacharis flow towards me. Let just as days change and emerge in the year, roll in the year, roll out and then disappear in the year, similarly, they all come to me. Sarvataha ayantu, sarvadigbhyaha, from all directions, from all sides, let all the students come to me so that I can disseminate this knowledge which I have gained. What a wonderful prayer it is. That is the love of a guru. इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. So he is praying Ishvara directly, please send them right candidates, right students to me so that I can mold them, I can shape them. So this is a prayer of every teacher, every acharya. Every acharya prays the same way. That let people come and listen. Let people come, take the knowledge and go. And disseminate it. They should not again keep quiet. Like Vivek Chudamani, it comes, the end after training is over, Shishya also realizes the truth. So what did disciple do in the Vivek Chudamani? He puts namaskar. Guru goes in one direction, Shishya goes in another direction. That's how they depart. The Shishya also goes, he also illumined, and he goes. Whoever comes in search of people, when somebody comes to him, again he wants to emanate that knowledge. So that is the beauty. Sarvataha mam ayantu agachantu sarvadigbhyaha. Beautiful. After this prayer, again, prativesho se pramaba hi pramapadyasva. That's the meaning now. Prativeshaha. Prativesha means shrama apanayana sthanam, number one. Shrama means tiredness. Apanayana, that a resting place where your tiredness will be removed. What is prativeshaha? Shrama apanayana sthanam. A resting place. Just as a rest house nearby, adjacent. So when we are traveling on long distance, we always search for resting places, motel, if not hotel. Hotel and a motel. Only hotel will not do, motel also required. 4-5 घंटे आराम करके कुछ खा के we search for rest houses. So when we are in journey, rest houses are searched for, good hotels are searched for.
कुछ आराम करके, कुछ देर बैठ के, कुछ खा के पी के आराम करके फिर चले जाएंगे. Now here Prativesha means, who is Prativesha? Ishvara only Prativesha. Why you are a resting place? See, Shrama Apanayana Sthanam, Asanna Gruham ityartha, or a nearby house. It is the meaning. A nearby house is there, paas mein jo ghar hai, where you can take rest. So Asanna Gruham or Shrama Apanayana Sthanam, a place where the tiredness, everything is removed. It can be eliminated. So that is called Prativesha. Now Prativesha means evam tvam Prativesha iva. You are a Bhagavan, just as a resting place gives rest to people, you are Prativesha. Why? Because Prativesha tat sheelinam sarva papa dukkha apanayana sthanam. Yours is a place where sarva papa dukkha apanayanam. When I enter into you and take rest, you will remove all the tiredness of sarva papas are removed, dukkha is removed. So what is the place? Yours actually, you are the place when I enter, you are a Prativesha, like a rest house, yours is like rest house. When I enter into it, all my janma, janmantara dukkha, shrama, tiredness, stress, exertion, sins, disturbances, everything would go. Therefore, you are Prativeshosi. You are Prativeshaha. Asi. You are what? You are what? Prativesha. That means you are like resting place to me. Prativeshosi. Ataha. Therefore, Mam Prati Prabhahi. Prakashaya Atmanam. Therefore, O Prabhu, you are a resting place. You are Prativeshaha. Therefore, towards me kindly, prakashaya, atmanam prakashaya, you reveal yourself to me. When you reveal yourself to me, I can enter into you and take rest. That is a prayer. And who is resting place? No, here, यहाँ पे resting place जो है ना, वो हर जगह है. All pervading resting place. That's why, Karau Sada Vishrama. तिनके हृदय कमलमहु करौ सदा विश्राम. So, in his lotus heart, Paramatma, such takes rest in a devotee's heart. विश्राम करते हैं. ऐसे भक्ति लोग बोलते हैं कि भक्त का जो हृदय है ना, भगवान के लिए आराम का जगह है. The Bhakti Shastra. Devotee's heart is a place of rest for Bhagavan. But in Jnana, the infinite Paramatma is there. So you are always there around me. You reveal yourself to me. I can enter into you and I can take rest. So ataha mam prati, towards me, prabhahi, prakashayati, prakashaya atmanam, prapajjasva, prapadya no? Pajyate gamyate no? Pajya word, prapajjasva, meaning reach me, you prapajjasva, mam prapajjasva. You reach me towards me. You reach me. Through and through you reach me. You enter into my heart. Through and through, every cell you enter. Every thought you enter. Prajnanam Brahma. Beautiful. So in every thought, Paramatma is hidden. It is illumining the thought, vritti. So in every thought will become antarmukha, it can rest in Paramatma. So, ataha mam prapajjasvacha. Mam, how example is given? Prakashaya atmanam prapajjasvacha. Moreover, reach me through and through. Mam rasavidhamiva loham tvanmayam tadatmanam kuru ityartaha. Now, rasavidham iva loham. Just as gold or any loha you take, you put that gold in mercury. That loha is soaked in rasa. Just as loha soaks in rasa, metals are soaked always in liquids for protection, so many things. Similarly, rasavidham iva loham tvanmayam. See, tvanmayam means tvatmayam. Make me full of you. Mam tvanmayam.
Make me full of you. You enter into me and make me full of you. Tvadatmanam kuru. Make me your own self. You enter into me and make me as you are. Tam atmanam kuru iti arthaha. So prativesha. Just as water enters towards slope direction and also days and all change and merge in the air. Similarly, all students come to me from different directions and learn from me this vidya which I have gained. No, I cannot go on advertising myself. Paisa kharch karke. So I sit here, a Paramatma, send all those people towards me so that they can take this knowledge from all directions. Please do it. And also, Prativeshaha. Moreover, you are Shrama Apanayana Sthanam, Asanna Gruham. Therefore, Prabhahi, Prakashaya, reveal yourself, make me full of you, and let myself enter into you. This is the prayer. So now, Yaschandasa Vrishabho Vishwarupaha, Sa Mendro, Sa Me Indraha, Medhaya Sprunotu. From that onwards, prayer started. Shrutam me Gopaya, up to that is Medha Kamas. You protect Gopaya, Raksha. Shrutam, whatever I heard, protect it. From till that point is the Medha for intelligence, Japa. Then afterwards, Homa mantra started. Then the prayer is offered. Now, Bhagavan Shankaracharya concludes, Shri Kamaha Asmin Vidya Prakarane Abhidhiyamano Dhanarthaha. Shri Kamo Asmin Vidya Prakarane Abhidhiyamano. Now, for Dhanarthaha, for the sake of gaining wealth, this subject has been dealt. Abhidhiyamana, this is given here. In Asmin Vidya Prakarane, in this subject, in this particular thing, Vidya Prakarane, in the context, in the text, what we are doing right now in the paragraphs, in the Anuvakas, Sri Kamaha Dhanarthaha. Sri Kamo Asmin Vidya Prakarane Abhidhiyamano Dhanarthaha. So Sri Kama for the desire of the wealth, this Prakarana is given. For Dhanarthaha, sake of wealth. So, one who is asking, seeker of wealth ke liye, this paragraph indicate the home mantras. Why dhanam? Dhanancha karmartham. अब ये पूछते पैसा क्यों? पैसा फॉर कर्मा. विच कर्मा? अच्छे कर्म के लिए. बिना पैसा कुछ भी हो नहीं सकता. तो इसे धनम मूलम इदम जगत. Sampatti is required. So, कर्मार्थम फॉर कर्म करना. अच्छे अच्छे कर्म करना हो तो पैसा चाहिए. दान देना हो पैसा चाहिए. पूजा करना हो, करवाना हो पैसा चाहिए. जप करना हो पैसा चाहिए. क्यों? माला खरीदने. अब सोच लीजिए, आसन पर बैठना है, आसन तो नहीं है, खरीदना है. देखो, अच्छे ऑल्टर होना चाहिए घर पे, पैसा चाहिए. कम से कम सम रूफ, पूजा रूम इज रिक्वायर्ड, पैसा चाहिए. भगवान को धूप दीप नैवेद्य, पैसा बिना वो कहां से आता है? धूप दीप नैवेद्य कुछ भी नहीं आता है. देख लीजिए. अच्छा, पिलग्रिम टूर, मनी रिक्वायर्ड. अच्छे किताब पढ़ के पढ़ना है, पैसा चाहिए. चलो प्रवचन सुनते हैं, पैसा चाहिए फॉर ट्रांसपोर्ट. सो कर्मार्थम. Why wealth is required? So that I can use this wealth for karma, good karma. Why karma? Karma cha upatta durittakshayaya. Why karma? Upatta means collective sins which are all durita sins. Janma janmantara jo sins we have collected, no? How do we अच्छे अच्छे कर्म करते करते बुरे कर्म का नाश करना चाहिए. So upatta, collection, collected bad karmas are there. Atonement, प्रायश्चित्त कर्म भी पैसा चाहिए. देखिए, that is why na always important. Remember, whenever you donate even 1 rupee or 5,000 or 10,000 or 1 lakh, whatever donate, check your mind. Is it real? पीछे किसता क्या?
देखो सोच लिया 1000, एग्जाम्पल गिविंग यू, निकाला 500, मंदिर के जाते जाते समय यू चेंज द 500 नोट इनटू 500 रुपीज, हाथ में पकड़ा 100 रुपया, मंदिर के अंदर घुसने के बाद थाली में और एक 50 रुपया नोट देखा पुजारी के थाली में, तो ये डाला वो ले लिया अभी 1000 का संकल्प 50 हो गए। तो भगवान देखते हाय राम हाय राम, भगवान भी राम राम बोलते हैं। कौन है भगवान? वो राम जी बैठे वहां पे फॉर एग्जाम्पल, तो कृष्ण भगवान कृष्णा कृष्णा ही विल से। तो 1000 का थॉट, इट इज द माइंड विच इज डूइंग इट। विचित्र है ना, टेल यू, विचित्र की बात है। मेरे जीवन में अनुभव बता रहा हूं आपको। सपोज आई वांटेड टू डोनेट समथिंग टू समवन, पैसा आ जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब अच्छे काम, और आश्रम फॉर एग्जाम्पल समथिंग आई वांट टू डोनेट टू समथिंग समवन, ठीक है, उस अच्छा काम के लिए थोड़ा दान देंगे। दान हम भी भीख मांगने वाले हैं, हम कहाँ से देंगे दान? संकल्प तो आया है, आने दो, यू मिस्टीरियसली मनी विल कम ऑन द टेबल। कोई ना कोई आके रखता है वहां पे, बोला ठीक है भाई, एंड वहां पे वो कवर देखने के बाद मुझे याद आता है, वो महात्मा याद आता है, वो ये मेरा है, अच्छा ठीक है बाबा आपका ही है, दे देंगे ना, मोल इंस्ट्रूमेंट ना। उसमें फिर कंजूसी मत लगाना, परसेंटेज थोड़ा। दिस इज एक्सपीरियंस। यू वांट टू गिव टू सम टेम्पल समथिंग, सम आश्रम, आवर ओन मिशन, सम वर्क के लिए पैसा देना हो, किसी को तप का आ जाता है। दिस इज एक्सपीरियंस, एवरीडे होता है हमारा, तो साल में पूछो मत कितने बार होता है। सो दिस इज द वर्ड, अदरवाइज यू नो श्री वी कैन डिजायर। अच्छा आपको ना, जब ये होम मंत्रास, प्रेयर फॉर ऑफर्ड, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट जब वापसी देने में चेक द माइंड। भगवान शंकर लिख दिया कर्मार्थम करके, वो तो अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, कर्म के लिए पैसा चाहिए, बट करने में असमर्थ है। क्यों? मन तो खींचता है। वी टेल एक स्टूडेंट्स के लिए ना एग्जाम्पल, हमारे एक महात्मा जी अभी नहीं है, गुरुदेव को भी जानते हैं, गुरुदेव भी जानते हैं उनको, वो भी बड़े महात्मा है। तो इज नॉट नो मोर अटेंड सिद्धि, वो 12 ईयर्स बैक, 11-12 ईयर्स बैक, ग्रेट प्रवचन करता, ग्रेट महात्मा। तो उन्होंने मैंने उनके द्वारा हजारों लोग आते थे उनके प्रवचन में, तो मैं भी एक सुना, बहुत साल पहले एक कहानी सुना था, कैसा मन खींचता है। एक विद्यार्थी ने बार बार परीक्षा में फेल होते जा रहा है, एक सब्जेक्ट उसकी परीक्षा में परेशानी, मैथमेटिक्स समझो। तो उन्होंने भगवान के पास गया, भगवान मेरा इज्जत निकाल रहे हो आप, बार बार मैं इसमें फेल होते जा रहा हूँ, कुछ करो, इस बार मैं आपको, मुझे पास करवा दो, मैं आपको खीर खिलाऊंगा। तो भगवान वॉज टेम्प्टेड बाय खीर, बोला ठीक है बेटा, उसको बुद्धि में घुस के उनको कुछ ऐसा विचार दे कि ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो, एग्जाम में वही निकला। आप देखो 3 घंटे में, ये तो महाराज 2 घंटे में खत्म कर दिया लिखना पूरा, फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। इसके अलावा जो कुछ पूछो उसको कोई नहीं जानता, उसको ही डजंट नो एनीथिंग अदर देन दिस क्वेश्चन व्हाट ही स्टडीड, लिख दिया। फिर 1 घंटा है, क्या करना है, एंड एग्जाम यू आर नॉट अलाउड बिफोर 20 मिनट्स अंडर, सो वो है ना, तो 1.25 घंटा बना, क्या करना है। तो उन्हें बेचारा उसको और एक्स्ट्रा वो पेपर पड़ा है, उसको व्हाइट पेपर, उसके ऊपर लेके चेकलिस्ट फॉर खीर, सोचा कि जेब में रख के जाऊंगा कि सामान खरीदना है। तो उसे पहले लिखा है अच्छे चावल, राइस पायसम, खीर के लिए। फिर बाद में दूध, गाय का दूध लिखा 2 लीटर, 1 किलो राइस चला, 10 लीटर दूध लिखा, किशमिश, कैशू नट, गाय का घी, अच्छे चीनी और इलायची सब लिखा। लिखने के बाद सोचा भगवान तो अच्छा है, उनको इतना खीर क्यों खिलाना, तो उसमें आधा आधा क्वांटिटी करते करते गया वो। अच्छा, फिर भी सोच लिया कि भगवान तो प्रेमी है, मैं कहाँ से उनको किशमिश ये कैशू नट खिलाऊं, वो तो
परमात्मा है, सर्वव्यापी है, वैसे तो खाते होंगे हर जगह, तो इनको ज़्यादा क्यों मोटा बनाना भगवान कृष्ण जी को, करके किशमिश और कैचू कट। फिर बाद में सोचा कि इलायची तो स्वाद होता है, स्वाद के लिए भगवान को प्रसाद है, उसको इलायची कट। अच्छा करते 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 ना आखिर में वो तो बहुत वो कम रख दिया कि 100 ग्राम चावल और ये कुछ दूध, ऐसा कुछ दिखाने के लिए। भगवान मंदिर में बैठ के देख रहे कि हाय राम मुझे धोखा दिया एग्जाम लिखने के बाद, तो धोखा दिया धोखा दिया धोखा दिया, वो महात्मा जी कहते थे स्टोरी। तो जब इसी में घंटी बज गई कि एग्जाम हो गया, खत्म हो गया, पेपर दो, वो जल्दी बड़े भगवान ने क्या किया, उसको ये चेकलिस्ट दे दिया उसको और आंसर शीट जेब में ला गया। चेकलिस्ट इन्विजिलेटर को दे दिया, आंसर शीट जेब में आ गया। भगवान बोले, रात सपने बोला, अरे बेवकूफ मुझे धोखा देता है तू, इतना समर्थ हो गया खबरदार। तो हम भी दान देते समय ना भगवान को हम धोखा देते, स्पेशली ये बालाजी के मंदिर में जो लोग बहुत बोलते हैं ना, ये कहाँ से नियम नहीं है पता नहीं, भगवान तो दिस नो ऐसा नियम कहीं नहीं बताया। सपोज यू विश 10,000 रुपये दूंगा दिल्ली में बैठ के, भगवान मैं आपके पास आके 10,000 में ट्रेन टिकट कट देते हैं। भगवान बोलते 10,000 मुझे डालने के लिए कहा, वो तो नहीं, भगवान के यात्रा में ट्रेन टिकट का कितना हुआ हिसाब, खाना पीना का सब खर्चा निकाल के 2,000 डालते हैं उसमें। दैट इज द रूल। बोल पता नहीं, ये भगवान तो नहीं बताया, ही नेवर मेड सच बनाया ऐसे रूल का, हम बना दिया रूल ऐसे ला। He never said cut it, your 10,000 promise 10,000 you do it ना, उसमें फिर क्या, what is your perks you are taking? I never allowed you. This is how भगवान को हम धोखा देते रहते। So karma kshaya is very difficult. Once you get the wealth, mamata increases. इसलिए मेधा कामस्य, इंटेलिजेंस इज प्रॉपर, फर्स्ट इंटेलिजेंस, सो दिस प्रॉपर डिवाइन इंटेलिजेंस विल नॉट मेक माई माइंड कंजूस। ठीक है। सो कर्म च उपात्त दुर्तक्षयाय तत्क्षये ही विद्या प्रकाशते। नाउ देखो, ऑल कर्म इज डिस्ट्रॉयड, विद्या प्रकाशते, विद्या knowledge shines forth. Whatever bits and bits of knowledge that we have gained, plus the real knowledge of Paramatma, the Swayam Prakasham, it shines forth. And this is truth. When our karma kshaya is, that's why in life we should, that's why training is given. When the youngsters को training दिया जाता है in our shastras, whether boys or girls, the training is that live in such a way that your karma kshaya takes place while you are living in life. एक बार एक का भोज नीचे डाल दिया, फिर उसको उठाओ मत, सिर पर मत लगाना। How we keep that on the head? By memory, by repenting, by analyzing the past. The training is given how to drop the past. तो क्या है, हल्का होते जाते हैं हम। हल्का होते जाते हैं ना, ध्यान लगता है, आसानी से ध्यान में बैठ के कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर लिविंग लाइफ, यू आर लिविंग विथ रिवेंज, रिएक्शन, मेमोरी पावर, ये गुस्सा याद बार दिल याद में ला के फिर अगेन ये, देन यू आर मेकिंग मोर एंड मोर परेशानी, yourself, you are putting yourself in trouble. Why this is happening? Because we are not given first proper training in buddhi. So vidya prakashate. Why? Tathacha smrutihi. Mahabharata it comes, and also Garuda Upasana, Garuda Puran में ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः. When papa karma is being kshaya, completely destroyed, then pumsam in a person jnanam utpadyate, knowledge shines forth. Yatha adarshatale prakye pashyati atmanam atmani. Just as a cleaned mirror, surface of the mirror is cleaned, then you can see yourself very clearly. Similarly,
when the karma kshaya is, heart becomes pure. You can see yourself. Iti. Iti Sikshavalyam Chaturtho Anuvakaha Samaptam. Thus, fourth Anuvaka is completed. Now, there is no point in going into fifth Anuvaka. Very interesting. Then, next, what happens, the student is now trained to contemplate on Brahman, who is hidden, embedded in Vyahritis, Hiranyagarbha Rupena. As Hiranyagarbha, Brahman, as Hiranyagarbha, hidden in Vyahriti, Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha. These three indicate three lokas. Bhuhu, Bhuvarlo, earth, physical plane, Bhuvaha, intermediate regions, and Suvaha, other regions. And the fourth Vyahriti is Mahaha, that will come. Maha Chamasya Pravedayate. So now this slowly the mind is lifted to subtle things. Antarupasana it is called, inner meditations. Now Bahe, Sri Kama, Home Mantras, Japa, everything is over. Now I turn within. That is how we can continue this from 21st to 24th January 2009. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Sadgurunath Maharaj Ki Jai.